हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 80386 आर्किटेक्चर के बारे में. सो इट इज एनहांस्ड वर्जन ऑफ 80286 माइक्रोप्रोसेसर. दिस इज 32-bit प्रोसेसर, राइट? 32-bit data bus, 32-bit registers and 32-bit address bus. So accessible physical memory by this processor is 2 raised to 32, means 4 GB, up to 4 GB it can access. 80386 CPU supports 16 KB of segments. So total virtual memory space is 14 GB into 16 KB. Sorry, 4 GB into 16 KB, which is of 64 TB. So 80386 memory manager is similar to the 80286 except the physical address generated by the MMU are 32-bit wide instead of 24-bit. 80286 में 24-bit था, यहाँ पे क्या है 32-bit. So the concept of paging was introduced in this processor 80386. So 80386 is capable of performing more than 5 million instructions per second, right? So 80386 supports 3 operating modes: DL mode, which is the default mode, protected virtual address mode, and virtual mode. So the memory management section of 80386 supports virtual memory, paging, and 4 levels of protection. आर्किटेक्चर की बात करें तो बस यूनिट, कोड प्रीफेच यूनिट जिसमें आएगा प्रीफेच क्यू एंड प्रीफेच यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट which contains instruction unit and instruction queue, right, to fetch from code prefetch unit. Then आएगा एग्जीक्यूशन यूनिट जो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन क्यू में से आए हुए कोड को, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. So it contains register file, barrel shifter and ALU. Segment unit, which includes segment descriptor cache and segment unit. Paging unit includes page descriptor cache and page unit. So bus unit में से जो भी डेटा होगा वो कहाँ पे आएगा, कोड प्रीफेच यूनिट में, राइट? एंड वो जाएगा इंस्ट्रक्शन यूनिट में, राइट? उसके बाद क्या होगा, इसका एग्जीक्यूशन होगा, फिर सेगमेंट यूनिट एंड पेजिंग यूनिट वापस से बस यूनिट में अप्लाई देगा वो. सो बस इंटरफेस यूनिट की बात करें तो बस इंटरफेस यूनिट कनेक्ट्स 80386 विथ मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. It is based on internal request for fetching instructions and transferring data from the code prefetch unit. 80386 generates the address, data and control signals for the current bus cycles. Code prefetch unit का काम क्या है? So it prefetches the instruction when bus interface unit is not executing the bus cycles. मतलब उस पे अभी कोई डेटा नहीं होगा, तब वो क्या करेगा, बस में से जो भी डेटा होगा वो फैच करेगा, ठीक है? जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो उसको फैच करता जाएगा जब एग्जीक्यूशन यूनिट में ऑलरेडी एग्जीक्यूशन चल रहा होता है तब. सो इट then stores them in 16-byte instruction queue. पहले क्या होता था, 6-byte इंस्ट्रक्ट स्टोर करता था, ये 16-byte इंस्ट्रक्शन क्यू में डिकोडिंग के लिए इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा. इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है? जो भी प्रीफेच क्यू में से इंस्ट्रक्शन आए हैं उसको माइक्रो कोड्स में ट्रांसलेट करेगा. देन डिकोडेड इंस्ट्रक्शन आर देन स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन क्यू इन अ फीफो ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे जैसे प्रीफेच कोड में से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उसको फेच करता जाएगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा बाय यूजिंग, और वो कौन करेगा, एग्जीक्यूशन यूनिट. एग्जीक्यूशन यूनिट हैज 8 general purpose register which are either used for handling data or calculating the offset address. So execution unit processes the instruction from the instruction queue. Instructions queue में जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उस पे वो प्रोसेस करेगा, मीन्स डिकोडिंग करेगा, देन एग्जीक्यूशन करेगा. So it contains control unit, data unit and a protection test unit. The barrel shifter increases the speed of the shift and rotate operations. Segment unit क्या करेगा, it calculates
and translates the logical address into linear address at the request of execution unit. Paging unit क्या करेगा? The translated linear address is sent to the paging unit. So upon enabling the paging mechanism, the 80386 translates the linear addresses into physical addresses. Paging क्या है? Paging is a storage mechanism जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज में से प्रोसेस रिट्राइव करता है, उसमें से प्रोसेस लेता है. So if paging is not enabled, the physical address is identical to the linear address and no translation is necessary. 80386 register organization. So these all are the general purpose register: accumulator, base index, count, data, stack pointer, base pointer, destination index, source index. These all are the segment register, and this is a index pointer and flags. ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है एंड ये फ्लैग्स. सो फ्लैग रजिस्टर में 0 to 15 तक बीट है, राइट, और दूसरी 16 to 31, ये सभी अनडिफाइंड है, राइट. वर्चुअल मोड अनेबल. जब ये बीट सेट होती है 1 पे, 80386 विल स्विच फ्रॉम प्रोटेक्टेड टू वर्चुअल. Resume flag. It is used in conjunction with the debug register breakpoints. Means when RF is set to 1, it causes any debug default to be ignored on the next instruction. Means कोई भी debug time पे अभी कोई भी fault आया है तो वो next instruction है, ठीक है, तब तक वो next instruction पे ignore किया जाएगा जब तक दूसरा instruction आएगा तब तक. So RF is can automatically reset at the successful completion of every instruction. Operating modes of 80386 कौन से है? रियल एड्रेस मोड, प्रोटेक्टेड वर्चुअल एड्रेस मोड एंड वर्चुअल मोड. सो रियल एड्रेस मोड की बात करें, सो जब ये रीसेट होता है 80386 प्रोसेसर, द इनिशियल ऑपरेटिंग मोड इज रियल एड्रेस मोड. सो ये 8086 ऐसे ही वर्क करता है विथ 32 बिट रजिस्टर्स एंड डेटा टाइप्स. रियल एड्रेस मोड is in effect after a signal on the reset pin. मतलब ये कब मोड स्टार्ट होगा? जब reset pin को सिग्नल मिलेगा तब. So even if the system is going to be used in protected mode, the startup program will execute in a real mode temporarily while initializing the protected mode. मतलब ये मोड जब एग्जीक्यूट होगा तब भले ही प्रोटेक्टेड मोड में कोई सिस्टम प्रोसेस कर रही होगी, बट स्टार्टअप प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा? रियल मोड में से. सो एड्रेसिंग टेक्निक्स, मेमोरी साइज, इंटरप्ट हैंडलिंग इन दिस मोड ऑफ 80386 आर सिमिलर टू द रियल एड्रेसिंग मोड ऑफ 80286. रियल एड्रेस मोड में द डिफॉल्ट ऑपरेंड साइज कितनी होगी? 16 बिट, बट 32 बिट ऑपरेंड्स and addressing modes may be used with the help of override prefixed instructions. So maximum physical memory is of 1 MB. Protected virtual addressing mode. So MMU, memory management unit, operates similar to 80286. Virtual addresses are represented with the selector component and an offset component. Right? Selector क्या करता है? Selector जो डिस्क्रिप्टर टेबल होती है उसकी इंडेक्स होती है, राइट. सो द सिलेक्टर कंपोनेंट इज यूज्ड टू इंडेक्स अ डिस्क्रिप्टर इन अ डिस्क्रिप्टर टेबल. डिस्क्रिप्टर कंटेन्स 32 बिट फिजिकल बेस एड्रेस फॉर द सेगमेंट, राइट. सो द ऑफसेट पार्ट ऑफ द वर्चुअल एड्रेस इज एडेड टू द बेस एड्रेस प्रोड्यूस द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस. ऑफसेट पार्ट जो होगा वर्चुअल एड्रेस का, ठीक है, वो क्या करेगा? वो बेस एड्रेस में ऐड होगा. एक्चुअल फिजिकल एड्रेस अगर चाहिए हमें, वर्चुअल एड्रेस का जो ऑफसेट पार्ट है वो एड्रेस कहाँ पे ऐड होगा? बेस एड्रेस. So the offset part of a virtual address can be 16 bit or 32 bit, दोनों में से कितनी भी बिट का हो सकता है. So segment can be large as 4 GB. So virtual memory की साइज ऐसे 64 TB की होती है.
ऑपरेटिंग मोड्स इन 80386 में PVAN का देखें फिर से तो एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी मेमोरी सेगमेंटेशन का एडवांटेज क्या है तो सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोड एंड डेटा स्ट्रक्चर्स इन अ प्रोग्राम सेगमेंटेशन मींस पार्टीशन तो ये क्या करेगा डिवाइड कर देगा ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ेगी सो हिज सेगमेंटेशन इज यूजफुल limitations of segmentation of memory if we need only a part of memory even then we have to swap the whole segment content this will increase the time of execution ठीक है हमें सिर्फ सेगमेंटेशन मींस पार्टीशन राइट तो उसमें से हमें सिर्फ कोई एक मेमोरी का पार्ट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा पूरा सेगमेंट कंटेंट है पूरा सेगमेंट ठीक है उसको हमको स्वैप करना पड़ेगा virtual mode paged mode in virtual mode 8086 can be addressed up to 1 MB of physical memory that may be anywhere in 4 GB address space of the protected mode of 80386 so in this mode instead of segments 4 KB of fixed page length are used इसमें एक particular fixed length दी जाती है पेज की राइट 4 KB की So total memory available for paging, right? Paging क्या है? यह जो स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें से वो प्रोसेस को रिट्राइव करता है, right? So उसके लिए जो मेमोरी अवेलेबल है पेजिंग के लिए वो कितनी है 1 MB. That means 1024 KB. So size of one page. ये जो पेजिंग है उसमें एक पेज की साइज कितनी होती है 4 KB की. So how many pages can be addressable with 1 MB of memory? So simple, हम क्या करेंगे इसमें से ये 1024 KB है डिवाइड बाय 4 KB तो हमको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ पेजेस 250 पेजेस मीन्स हर एक पेज इज ऑफ जो भी पेज है ईच पेज इज ऑफ 4 KB पेज्ड मोड so limitation of page mode is pages do not correspond to logical structure of the program advantages ये है कि pages can be quickly swapped because ये 4 KB का होता है राइट हमको पूरा सेगमेंट यहाँ पे स्वैप करना नहीं पड़ेगा so वर्चुअल मेमोरी की बात करें so page directory entry each directory entry is of 4 bytes right so this 12 to 31 bits ये यूज होगा पेज टेबल एज अ पेज टेबल एड्रेस सो पहली कौन सी है 0 to 12 में P present bit if it is 0 it indicates entry cannot be used for the address translation right if it is 1 it can be used for address translation so P bit of currently executed page is always high ये always set होती है high पे So, अगर ये दोनों बीट्स है ठीक है ये अगर 0 होगी दैट मीन परमिटेड फॉर लेवल 3 इज नन एंड परमिटेड फॉर लेवल 0 1 2 इस सब में रीड एंड राइट ऑपरेशन होगी ये बीट 0 0 0 1 1 0 1 1 होगी तो ये सभी यहाँ पे रीड एंड राइट ऑपरेशन अलाउ है बट यहाँ पे सिर्फ अगर 1 0 होगा तो ही रीड ओनली होगा 1 1 होगा तो रीड एंड राइट होगा accessed bit is set by this processor before any access to the page if it is 0 page is not accessed if it is 1 page is accessed dirty bit means it is set before any write operation to the page this bit is are undefined for page directory entries and upper 20 bit of this means A31 to A21 are used to select 1024 page table entries. Page tables can be shared between the tabs.